Hello everyone, good evening to all. Welcome to Vanik Smart Class. This is Apas Ranjan Behra, the Faculty of Banking Awareness, Current Affairs and Finance. Welcoming you all to this live session. Good evening everyone. Wish everyone a very happy Raja Purnima to all. I hope ସମସ୍ତେ enjoy କରିଥିବେ ଆଜିର ଦିନ, but at the end of the day enjoyment ସହିତ କିଛି ପାଠ ବି ପଢ଼ିଦେବା, କିଛି information ବି gather କରିଦେବା. So as much as possible or as quick as possible, try to join the session. So shall we start now, or will you wait for much number of students? Good evening everyone. Good evening Pavitra, Bhagyasri, Rudra and all. Very good evening. Okay, so let's start the session without wasting our time. Today we are going to discuss an important day. Class really interested to take your classes. Very good evening all. So let's start the session. Here's the question. Last जहाँ भी क्वेश्चन इंपोर्टेंस ला इन कंपैरिजन टू दैट आज क्वेश्चन जहाँ भी अच्छी तार इंपोर्टेंस टिके कम अच्छी बट किसी क्वेश्चन इंपोर्टेंस बहुत अधिक अच्छी बट येस्टरडे व्हाट वी हैव डिस्कस तार क्वेश्चन इंपोर्टेंस बहुत अधिक थिला. ओके, सो क्वेश्चन फॉर यू ऑल. व्हिच लैंग्वेज वाज एडॉप्टेड एज अ रिजोल्यूशन ऑन मल्टीलिंग्विज्म को स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA? Only Hindi. In Hindi, but it was published in 3 languages. Okay, Bangla languages, your Urdu languages, as well as Hindi languages. Bangla languages, Hindi languages, and Urdu languages. Still problem. और वॉइस ऑडिबल होची ना होनी? राइट योर चैट बॉक्स. एबे क्लियर हैला वॉइस? एबे क्लियर हैला वॉइस? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स. वॉइस एबे ऑडिबल होची ना नहीं? So what should be the answer? यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन रे फर्स्ट टाइम बाई हिंदी रे आमे रिजोल्यूशन प्रेजेंट करचंती गवर्नमेंट ऑफ और द इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया प्रेजेंट इज इन अ लैंग्वेज दैट इज हिंदी. फर्स्ट टाइम इट वाज हिंदी रे आमे रिजोल्यूशन प्रेजेंट करचंती एज वेल एज ओके इट वाज प्रेजेंटेड इन उर्दू एंड बांग्ला. तो आंसर शुड बी ऑप्शन डी और ऑप्शन 4 इट विल बी ऑल ऑफ द अबव. ओके, आंसर विल बी all of the above. So जदि आम UNGA और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रो लैंग्वेजेस विषय डिस्कशन करिबा तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रो 2 टाइप्स रो लैंग्वेजेस को आम कंसीडर करछन. गोटे होची कोन ना ऑफिशियल लैंग्वेजेस. ओके, आ गोटे होची वर्किंग लैंग्वेजेस और ताको आम कोन कहउछंती वर्किंग लैंग्वेजेस बोली कहउछंती. ओके, तो व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? कौन कौन रोची ऑफिशियल लैंग्वेजेस? इट इज अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश. अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश. आउ कौन कौन रोची? ऐड करंतु आंसर. फ्रेंच,
Russian and Spanish. French, Russian and Spanish. These are the official languages. There are 6 official languages of United Nations Organization. Okay, that is your Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish. Got it? And there are 2 working languages of United Nations Organization. जो 2 languages रे United Nations Organization Secretariat रे work हुए, that is called English and French. That is your English and French. Okay, English and French. Okay, there is little bit of camera issue, I think. So let it done. Camera no subagale bhi, I mean ठीक से no देखा वाले भी no issue. अबे yes. Now the question is everyone that कि United Nations Organization के foundation इतला और United Nations Organization resolution के first time pass इतला. UN resolution के first time pass इतला. That is the question. I hope समस्त ही answer जानती पे कहीं ना United Nations Organization रो question अच्छी तो examinations पे ऐसा टाइप importance अच्छी. And I hope कि तुम्हें मैंने answer दे ही परियो. United Nations Organization के foundation है ला UNO 1945 very good 1945 रो code date रे United Nations Organization foundation हमारा story कौन history कौन okay the history is World War II it was World War II तार World War II रो पर situation ही हमारा United Nations Organization संस्था तैयारी करा गया नहीं कि World War II के बेटो हिटला 1939 to 1945 जाए World War II हिटला हाँ ना नहीं World War II end ही साला परे कौन है ना बहुत सारे जिनसे रो loss हिटला it was just 6 years of war between the major countries of the different segments of our society or segment of the nation you can say okay so 1945 रे तो World War end हैला तो बहुत सारे country तंगर economical loss करते ले से माने financial loss करते ले agricultural loss health issues okay numbers of issues are there leaders of the different countries okay great leaders of the different countries they have gathered in a conference in a place called San Francisco it is situated in California USA okay approximately more than 54 countries are brought together in San Francisco and they have decided there should be an international organization that will maintain peace and security among the member countries or member nations that's why the United Nations Organization was set up and the resolution of the United Nations Organization was passed on 24th October 1945. A date is very important. केबे पास है it was passed in 24th October 1945. तो ये जो date रहा 24th October it is otherwise सब वर्ष हम observe करते थे that United Nations Day. 24 October को हमें कौन ऑब्जर्व करती यूनाइटेड नेशंस डे और यूएन रो फॉर्म हमारा मेन इंटेंशन कौन ना टू मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी अमंग द मेंबर कंट्रीज तो प्रॉब्लम होच कौन वर्ल्ड वार हमारा सिचुएशन ऐसे कौन भाई ए सिचुएशन ऐसे कौन भाई ना कौन से रीजनल इश्यू रे छोटा छोटा रीजनल इश्यू भाई मे बी वर्ल्ड वार सिचुएशन क्रिएट हो जाए टेक एन एग्जांपल रशिया एंड यूक्रेन टेक एन एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान टेक एन एग्जांपल अफगानिस्तान एंड other countries Israel and other countries तो जहाँ भी गोटे issues अच्छी मे बी ये गोटे छोटा issue है पर it may be a large issue okay take an example कि जम्मू एंड काश्मीर got it तो जम्मू एंड काश्मीर गोटे छोटा issue अच्छी जमती यूक्रेन रो गोटे छोटा issue अच्छी किंतु कौन होची आज रशिया गोटे साइड रो अच्छी यूएसए गोटे साइड रो अच्छी नाटो कंट्रीज माने अगेंस्ट रशिया divided into two parts okay when the world will divided into two parts then जदि सेमान भीतर किसी war situation create होची then it will be called world war okay different countries रो different nations माने aggressively a war रे participate करंती तो war रो result कौन होए at the end of the day कुआजे के war कहीं भी जीतंती नहीं argument कहीं भी जीती पारंती नहीं same type रो only loss हुए
मे बी आम विन कर युद्ध विन करवा बट आमर कौन अल्टीमेटली फाइनेंशियल लॉस हम ओके अल्टीमेटली ग्रोथ पर्सपेक्टिव आम लॉस हम अल्टीमेटली लाइफ लॉस हम दैट्स व्हाई to solve a regional issue, to solve the minimum issue in the different nations, okay, that should be an international organization where we should have to gather and joti ame basiki se problem ro solution pai pariba. That's why United Nations organization has been set up in the year 1945 and the main initiative was taken by then president of United States, Mr. Franklin Roosevelt, okay. The Franklin Roosevelt, then president of the United States of America, initiative नेतले कौन भाई ये सेशन अरेंजमेंट करिया पाई सैन फ्रांसिस्को रे सेति पाई नाको नोबेल प्राइज फॉर पीस भी दिया गला ओके एटा बहुत थरा एसएससी रे क्वेश्चन आसरे नोबेल प्राइज फॉर पीस काको दियाइला ना फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को कौन पाई ना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रो स्टार्टिंग पाई से बहुत इनिशिएटिव नेतले गॉट इट सो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हैसला परे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जदि हमें ऑर्गन को देखिया होजिबा हाउ मेनी ऑर्गन्स डिड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैव इनिशियली इट हैज 6 ऑर्गन्स बट नाउ इट इज 5 कौन कौन ऑर्गन सब अछि चैट बॉक्स रे आपण माने लिखि परिबे लास्ट क्लास वी थिंक कि हमें डिस्कस भी करते लास्ट क्लास कौन कौन ऑर्गन्स ला इजराइल पैलेस्टाइन इज there are 5 organs. One is UNGA, United Nations General Assembly. One is UNSC, United Nations Security Council. Last class रे हमें पढ़ले जो कि स्विट्जरलैंड माल्टा they are appointed, okay, as non-permanent members. सेमती आगोटे अछि ICJ, that's called International Court of Justice, okay, International Court of Justice. गोटे केस सुनथिबा हमें रिसेंटली that कुलभूषण यादव, okay, इंडियन एक्स नावल ऑफिसर कुलभूषण यादव जहाकू पाकिस्तान आर्मी को निज कब्जा रे नेकी तांको लाइफ सेंटेंस रेटला और ताको फांसी भी देथिला तो आमे इंटरनेशनल कोर्ट रे ही अप्लाई करथले दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रे जोटी आमे तार एडवांटेजेस पाइतले गॉट इट जार हेडक्वार्टर होची द हेग इन नीदरलैंड सेम आउ कोन इंस्टीट्यूशन अछि जस्ट लाइक इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड द लास्ट वन इज द सेक्रेटेरिएट okay the secretariat there are 5 organs of United Nation organization you can say okay organ ro meaning hoji kon these are the major bodies a body bina United Nation organization proper functioning kari bhi pariboni got it and jodi a body he challa pare a gote institution thla jaha ko ame bond kar dele that is called the trusteeship council that is called the trusteeship council okay now it was abolished by the United Nation organization जदि सेम जिनस आम डिस्कशन करवा आ गोटे बहुत बड़ टॉपिक अच्छी लाइक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन केतरा ऑटोनोमस बॉडी अच्छी देयर आर 17 ऑटोनोमस बॉडी इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स इन द रिस्पेक्टिव फील्ड लाइक हेल्थ लाइक एजुकेशन लाइक लेबर फोर्स लाइक एनवायरनमेंट लाइक माइग्रेट ऑफ लेबर ओके तो सेति पे डिफरेंट फील्ड रे जहां भी इश्यूज अच्छी से इश्यूज को सॉर्ट आउट करिया पे इंस्टीट्यूशंस फॉर्म करा गला 17टा ऑटोनोमस बॉडी तैयार करा गला टेक एन एग्जांपल यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP just like ILO International Labour Organization just like your World Health Organization okay just like your UNCTAD okay just like UNICEF जस्ट लाइक यूनेस्को तो एमती टाइप 17टा ऑटोनोमस बॉडी तैयारी करा गला कहीं इंटरनेशनल लेवल रे ए सब जिनस और ए सब संस्थार जहाँ भी सब प्रॉब्लम्स अछि दैट प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व बाय टेकिंग द डिफरेंट इनिशिएटिव्स यस वेरी गुड अविलास वेरी गुड ओके सो एयर रिलेटेड आ गोटे इनफॉरमेशन अच्छी जोटा कि एवरीबॉडी शुड नो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बिकॉज ताको ही डील करके ताको ही लिंक करके आज का डेट रे इंडिया रो पॉलिसी फॉर्मेशन करा जाउछ दैट इज कॉल्ड योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और SDG दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और SDG बहुत मिनिमम नंबर्स रो केसेस थाए बहुत मिनिमम नंबर्स रो मैटर्स थाए जोटी कि SDG सहित आमे किसी डील करनो थाए ओके जदि SDG को हमें ब्रॉडली डिस्कशन करिबा SDG stands for Sustainable Development Goal. It is the goal of United Nations of Organization. Okay, the goal has been set from the year 2015 to 2030. 2015 to नेकी 2030 जाए goal set करा गला and there are 17 goals that comes under your
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अंडर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके 17टा गोल ही फिक्स करा जाउछि। अच्छा गोल कौन पाई फिक्स करा जाए दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और एनी अदर एग्जामिनेशंस जहाँ भी हमें एग्जामिनेशंस पाई फिक्स करचंदी और प्रिपरेशन करचंदी हम माइंड रे थाई कोन ना हमको जॉब करिवार अछि। ओके टेक एन एग्जांपल हमको बैंक रे जॉब करिवार अछि और एएस रो जॉब करिवार अछि। यदि बैंक रे जॉब करिबा हो किंबा एएस रो जॉब करिबा हो सेटा हम माइंड रे जोटा थाए तो इज दैट अ गोल और इट इज अ ड्रीम फॉर अस। आम जो कहते कि हाँ आमको जॉब करार अच्छे बैंक रे पीओ हबार अच्छी कि बैंक रे क्लर्क हबार अच्छी कि इंस्टीट्यूशंस रे कोठी सिविल सर्वेंट हबार अच्छी सेटा एक्चुअली हमर ड्रीम ना सेटा हमर एक्चुअली गोल और इंटरेस्टिंग मैटर पर आज डिस्कशन करछन्ती इज दैट अ ड्रीम और गोल चैट बॉक्स रे आंसर दियंतु जॉब करबा हमर ड्रीम ना गोल हमर सब थाए नहीं हमको कार चलेबार अछि। ओके एमजी हेक्टर कार चलेबार अछि ए जगह को बुलीबार जिबार अछि फॉरेन टूर करिवार अछि। ओके पेरेंट्स माने को गिफ्ट दबार अछि तो सेटा सब ड्रीम थाए ना हमर गोल थाए। ड्रीम थाए वेरी गुड आउ के भी आंसर दंतु ऑल द लाइफ स्टूडेंट्स कैन गिव आंसर ड्रीम्स। ओके देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड गोल देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ड्रीम एंड अ गोल। So that dream, ultimate dream, need है। Okay, so dream is something कुहा जाए सब हमें human being always runs behind the dream। आमे सब ड्रीम पछन ही दौड़ू थांती हमको एटा अचीव करियार अछि एटा पाइबार अछि जॉब करिवार अछि बट थिंग इज दैट कि व्हेन द क्वेश्चन इज व्हेन हमको जॉब करियार अछि बट को डेट रे हमको कार चढ़िबार अछि बट को डेट रे यस और नो हमको फॉरेन टूर करियार अछि बट को डेट रे। थिंग इज दैट कि ड्रीम को सब वाले हमें चेस करंती बट गोल को सब टाइम रे हमें अचीव करंती। ओके ड्रीम को हमें सब वाले चेस करथांती बट गोल को सब वाले अचीव करथांती कुआ जाय कि तो गोल रो जदि हमें गोटे इक्वेशन देखिबा गोल इक्वल्स टू ड्रीम प्लस अ पर्टिकुलर डेट। यस और नो गोल इज अ ड्रीम विथ अ पर्टिकुलर डेट। हमको जॉब करियर अछि को जॉब करियर अछि ना बैंक पीओ बाय द व्हिच डेट लाइक 31st मार्च 2023 or 1st April 2023 okay 31st December 2022 fix a date with your dream okay then it will be your goal। जदि हमरा गोल सेट करछन जेन डेट नहीं ना हमें एंथुसियाज्म आसीबनी काम करिया को फोर्स आसीबनी। टेक एन एग्जांपल जेतबे ग्रेजुएशन हमें पढ़ले कि प्लस 2 पढ़ले जेतबे एग्जाम डेट फिक्स है ना आमर गोल ही फिक्स है कि हाँ यही डेट रे ही मते कंप्लीट करिवार अछि देन हमर इफोर्ट भी बढ़ी जाए। बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कौन हुए ना टाइम बाय टाइम हमर एग्जाम सब आसु थाए। ओके तो जदि आमे गोटे स्पेसिफिक डेट फिक्स न करिबा कि नाही ए डेट भीतर हमको जॉब करिवार अछि कि जॉब करिवार नाही देन हम इफोर्ट भी सेति के अधिक आसीबनी। ओके सो ऑलवेज सेट अ गोल ड्रीम पछर तो समस्त दौड़ू थांती बट गोल को हमें सब अचीव करंती। ओके सो थिंक इज दैट कि आसीबा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन गोल से यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन गोल अच्छी से गोल को आम कौन कहते सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहले कौन कहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहीं वर्ल्ड वाइड बहुत सारा प्रॉब्लम्स अच्छी दैट प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व्ड केमती सॉल्व हो पारिबो ना आम जदि गोल सेट करिबा गोल सेट करके सेटा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज माने को डिस्ट्रीब्यूट करिया पड़ियो द कंट्री हैज टू बी एडॉप्टेड कि हां आम एनवायरनमेंट पे या काम करिबा हेल्थ इश्यूज पे या काम करिबा ओके पॉवर्टी एलिवेशन पे या काम करिबा चिल्ड्रेन एजुकेशन मानक काम करिबा तो से अकॉर्डिंगली ही डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज माने तांकर पॉलिसी फॉर्मेशन करचंती गॉट इट जेमति हमर आगु 5 ईयर प्लान थिला बट आमे 5 ईयर प्लान को एवोल्यूट कले कहीं ना हमको रिजोल्यूशन कहार पास करिबा सॉरी रिजोल्यूशन कहार द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ना गोल सहित आमे अलाइनमेंट हेक जिबार अछि। ओके दैट्स व्हाई 5 ईयर प्लान भी हमरो बंद हला एंड इंडिया रे नीति आयोग इज द सोल अथॉरिटी जे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रे कौन इंप्रूवमेंट होची सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रे को स्टेट केते परफॉर्म करची ताकू मेजर करची गॉट इट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अनुसार जेमति कि इंडिया रे बहुत सारा पॉलिसीज फॉर्मेशन हेची इंडिया रे बहुत सारा इनिशिएटिव ने जाई छै। टेक एन एग्जांपल वी हैव टेकन द इनिशिएटिव दैट बाय 2017 वी विल बिकम द जीरो कार्बन एमिशन कंट्री। आमे सेमति इनिशिएटिव ने जन कि बाय 2030 वी विल इंस्टॉल 450 gigawatt of renewable energy। Similarly, हम initiative ने चलते by 2025 we will become TB free। होला नहीं
दैट्स वाई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा इनिशिएटिव नौछि कहीं ना हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अलाइनमेंट सहित चलबार अच्छी और गोल को अचीव करिवार अच्छी ओके बहुत बड़ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहीं कौन भी न्यूज पेपर देखो कौन भी आर्टिकल आप पढ़ु था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिलेटेड इनफॉरमेशन थिबो ही थिबो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विषय इनफॉरमेशन थिबो ही थिबो ओके सर माय गुड नेम इज तापस रंजन बेहरा गोल अचीव बाय हार्ड वर्क या हाँ गोल अचीव ही पारिबो एमती किसी गोल नहीं जोटा अचीव हो पारिबनी गोल हार्ड वर्क रे ही अचीव हुए बट नाउ डेज ओके स्मार्ट वर्क भी करिया पड़िबो हाँ ना नहीं एवरीबडी सेज दैट और दैट इज अ कोड लाइक दैट इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क ठीक ना भूल जिनस कौन से भी सब्स्टिट्यूट नहीं हार्ड वर्क इट इज 100% राइट बट वी हैव टू डू हार्ड वर्क इन अ स्मार्ट वे ओके हार्ड वर्क बट करिवार अछि बट स्मार्ट वे रे अदरवाइज कोन होबना जत्ते सारा सिलेबस अछि ना हमर कवर करिया के बहुत टाइम लागि जिवो ओके इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम कि हां हम जॉब पाया पई 4 वर्ष 5 वर्ष 3 वर्ष तो एते टाइम हमें कोन दे ही परिवार ना वी हैव लिमिटेड numbers of times or limited numbers of years to given for the competitive examinations okay केमती स्मार्ट वर्क करिवा हार्ड वर्क तो करिया पड़िबा 8 घंटा रो 9 घंटा फॉर एग्जांपल हम जे टारगेट फिक्स करछंती 8 घंटा रो 9 घंटा हमको पढिया पड़िबो कि 6 घंटा 7 घंटा हमको पढिबा पड़िबो ओके पढिबा पड़िबो बट थिंक इज दैट स्मार्ट वर्क केमती करिवा हार्ड वर्क तो करछंती स्मार्ट वर्क केमती करिवा से स्कूल और कॉलेजेस टाइम रे एग्जांपल आपण नै परिबे केमती लाइक गोटे वर्ष ग्रेजुएशन टाइम एग्जांपल देले बेटर हम कहीं ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस बहुत पिला माने करथांती कि एट द एंड ऑफ टाइम पर्यंत किसी भी सिलेबस कवर होई नथाय पढ़ाई नथाय बट जब डेट आसी जाए एग्जाम डेट आसी जाए बट आमे कोन करंती वी हैव ओनली लिमिटेड नंबर्स ऑफ टाइम 7 डेज अछि 5 डेज अछि बट आमे सेतरे भी कंप्लीट करके भलो परसेंटेज अचीव कर दियंती केमती माने आमे स्मार्ट वर्क करंती कोन स्मार्ट वर्क करंती ओके एते सारा सिलेबस अछि कवर करिवारे बट आमे कोन करछन देखुछन कि लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कोन अछि प्रीवियस ईयर को सेक्टर को चैप्टर को यूनिट रे अधिक नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आछि से अकॉर्डिंगली ही प्रिपरेशन करंती जहा द्वारा कि हमको मैक्सिमम अचीवमेंट हो जाए बट इन अ मिनिमम टाइम सेम थिंग यू कैन अप्लाई इन योर एग्जामिनेशंस आल्सो ओके जस्ट लाइक कि बैंकिंग एग्जामिनेशन से जदि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पई हमें किसी फोकस करचंती टेक एन एग्जांपल एप्टीट्यूड ओके 35 मार्क्स रो क्वेश्चन आछि बट इन 20 मिनिट्स ऑफ टाइम and this 35 mark question रे 25 numbers of question आसी calculation based and only 10 numbers of question आसी जोटा कि arithmetic based then what should we do कहीं सब जगह question same mark content करछि किछि question अधिक टाइम नहीं जाउछि करिया पे किछि question कम टाइम रहि जाउछि ओके कैलकुलेशन एरिया को जदि हम फोकस करिबा कम टाइम रे अधिक नंबर्स ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करि परिबा दैट्स व्हाई वी शुड फोकस ऑन द कैलकुलेशन एरिया दैट इज द स्मार्ट वर्क टेक एन एग्जांपल इंग्लिश गोटे सेक्शन आछि इंग्लिश रे पाखा पाखी 30 क्वेश्चन रु 25 क्वेश्चन बेस करछि हमर रीडिंग हैबिट्स को ओके आरसी बेस्ड हला रीडिंग हैबिट्स बेस्ड हला 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 देन हमें कहा को फोकस करिबा रीडिंग हैबिट को ओके तो रीडिंग हैबिट को फोकस करके हमें कोन ना हमर वर्क को स्मार्ट वे रे करि परिबा बट हमको तो हार्ड वर्क करिया को ही पड़ियो ओके वी हैव टू डू हार्ड वर्क इन अ स्मार्ट वे टेक एन एग्जांपल कि हमर हिस्ट्री पढ़चंती ओके हिस्ट्री नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आसी हमको मॉडर्न हिस्ट्री तो आम कौन कर पढ़ा जब आम स्टार्ट करवा एनसीएंट रु देन कम नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आछि तो आमको एमती टाइप स्मार्ट वर्क करिवार अछि लाइक क्वेश्चन रिसर्च करिवार अछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करिवार अछि से फॉर्म रे ही आम निजर टाइम टेबल तैयारी करिवा और से अनुसार हमरो स्ट्रेटजी फॉर्म आउट करिवा ओके डेली बेसिस से टारगेट फिक्स करि परिबा एंड आपण माने टू डू लिस्ट भी करि परिबे आज दिन रे मोटे कोन पढिबार अछि तार लिस्ट करि के प्रायोरिटाइज करि के आपण पढि परिबे दैट विल बी योर बेस्ट फार्मूला फॉर दैट सो आई होप कि रिलेटेड क्वेश्चंस आपण को सॉल्व हो जाइथिबो एंड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रे बहुत सारा इश्यूज अछि हमें कमिंग क्लास रे मे भी से इश्यूज को डिस्कशन करिबा आज वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम नाउ वी शुड हैव टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कंट्री साइंड द line of credit agreement with or of $55 or million for the procurement of urea fertilizer कौन हो आंसर इट इज इंडिया अफगानिस्तान इंडिया श्रीलंका इंडिया नेपाल और इंडिया सेनेगल व्हाट शुड बी आंसर
कौन हम आंसर क्विकली we have option B very good India and Sri Lanka भाग्यश्री right answer India and Sri Lanka okay Sri Lanka रो situation जेमती अछि as a neighbor country we should have to give or help them in a different way. It is a part of India's neighborhood first policy. Okay, it is a part of India's neighborhood first policy. As all the countries like Sri Lanka, Afghanistan, Nepal, Bhutan, these are all neighbor countries. It is our responsibility that at the time of problem we should have to help them in a different way. Okay, but now India actually given so much amount of money to Sri Lanka. It is approximately 3.5 billion US dollars. Okay, if we combine all the amount, it may be more than 3.5 billion US dollar for different purposes. It may be a food issues, it for health issues, it may be for procurement of petroleum products from outside country. Okay, we have given approximately 3.5 billion US dollar. But recently, okay, the Exim Bank of our country, Exim stands for Export Import Bank. Okay, Exim Bank of our country, which is specifically dedicated for providing loan for procurement or for external trade or internal trade. Exim Bank recently have given 55 million US dollar to Sri Lanka. Combination for procurement of urea fertilizer. Okay, so Sri Lanka recently got a बहुत बड़ा food crisis रे गति करथला सेति में आमर एटा responsibility भी होची कि ताको हमें different way रे help करिया. So here is a question: the difference between a loan and line of credit. Loan और line of credit भितर difference कौन? Loan और line of credit भितर difference कौन? Can you explain anybody? Loan and line of credit. Loan is something. For example, गोटे amount sanction हैला 100 million US dollar sanction हैला श्रीलंका को loan sanction हैला. That means the whole amount or whole 100 million amount will be transferred to the account of Sri Lanka, and Sri Lanka is going to be paid the interest from the beginning. Okay, that is called loan. But in case of line of credit, okay, in case of line of credit, 100 million will be sanctioned for Sri Lanka, but now Sri Lanka needs only 30 million. Okay, that means out of 100 million we are providing 30 millions now a time or current time, and we will charge interest only on that 30 million amount of money. जेतबले श्रीलंका रे more money need हबो ताठो अधिक पैसा need हबो, they can withdraw out of this 100 million and then से टाइम रे हमको interest charge करा दिबो. Got it? That is the basic difference कि हाँ loan initial period रे सब जगह amount sanction हो जाता है, money transfer हो जाता है, interest initial amount full amount ऊपर हमें charge करते. In case of line of credit कौन हुए, amount transfer हुए और amount sanction हुए, सेतरे जते amount withdraw करते हैं से withdrawing amount ऊपर ही हमें interest charge करते. Got it? So where is the headquarter of Exim Bank? Where is the headquarter of Exim Bank? Yes, Nilachal, right answer. Headquarter of Exim Bank. Kondu, it is situated in Mumbai. It is situated in Mumbai. बहुत सारे सेमते बैंक अच्छे इंडिया तो कहा जाए इंडिया रे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोली कहा जाए मुंबई को कहा जाए कहीं मैक्सिमम नंबर्स ऑफ banks and maximum numbers of financial institutions are presenting in Mumbai, like your BSC, Bombay Stock Exchange, NSC, National Stock Exchange, Reserve Bank of India, SEBI, okay, ICICI Bank, your SBI, okay, your HDFC Bank, Bank of India, like NABARD, like Exim Bank, okay, these are the major institutions or financial institutions are situated in Mumbai. That's why Mumbai is called the financial capital of our country. Got it? So NHB got a bank also, National Housing Bank. NHB is situated in New Delhi. Okay, similarly SIDBI बोले गोटे बैंक अच्छी Small Industries Development Bank of India. It is situated in Lucknow, Uttar Pradesh. Okay, Lucknow, Uttar Pradesh. Got it? So let's go to the next question. Nickname of the cities भी बहुत सारा नहीं की जेमती मुंबई को आम कौन कहते ना फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया सेमती मुंबई अलग ना हो कौन इट इज ऑल्सो कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया आम कहीपर हाँ ना नहीं सेमती बैंगलोर को कौन कह जाए सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इट इज द आईटी सिटी इज द इलेक्ट्रॉनिक सिटी ओके सेमती
ट्विन सिटी बोली क्या कह जाए इट इज सिकंदराबाद एंड हैदराबाद ओके सिटी ऑफ लाइक बिल्डिंग्स क्या कह जाए ना कोलकाता कह जाए सिटी ऑफ बिल्डिंग सिटी ऑफ टेम्पल इट इज योर वाराणसी ओके सिटी ऑफ नवाब लखनऊ तो बहुत सारा नंबर्स कौन अच्छी बहुत सारा सिटीज मानकर निक नेम अच्छी और निक नेम ऑफ द सिटीज अच्छी लाइक अमृतसर को कौन कह जाए गोल्डन सिटी पिंक सिटी कह जाए जयपुर को तो दिस आर कम्स इन योर स्टैटिक पार्ट ओके तो स्टैटिक इनिशिएटिव जब हम पढ़ुं गोटे थर लिस्ट करदे लिस्ट कले जहाँ जहाँ इंपोर्टेंट सिटीज अच्छी तो सिटीज निक नेम आम गार्डन सिटी यस अमरदीप सिंगिल वेरी गुड who has been appointed by the United Nations Secretary General Antonio Guterres as his envoy on technology कहा को रही है अमरदीप सिंह गिल को रही है अमरदीप सिंह गिल India रा senior diplomats okay he is a senior diplomats of India who has been appointed in United Nations organizations कौन भाई particularly envoy for the technology okay Antonio Guterres is the president of यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली आम कौन कहले जो सेक्रेटरी जनरल कहार था सेक्रेटेरिएट सेक्रेटरी जनरल था अल्टीमेटली दोज हु आर और हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीएट इज अल्टीमेटली द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ओके एंड एंटोनियो गुटेरेस इज फ्रॉम पोर्तुगाल गॉट इट इसे खाली ना ही मन रखार अच्छी आउ किसी अधिक इंपोर्टेंट इश्यूज नहीं Next year. To which planet does NASA plans for the tentative launch 2029 year for Vanik mission? कौन तो? Last class भी हमें discussion करते थे मंगलयान विषय चंद्रयान विषय okay China is given the better road map or geographical map of moon last class हमें discussion करते थे समुद्रयान विषय discussion करते थे okay गगनयान विषय भी डिस्कशन करते तो आज क्वेश्चन होची कौन ना प्लान करछि कि यूनाइटेड नेशन रो नासा द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नासा इज सिचुएटेड इन वाशिंगटन डीसी ओके सिचुएटेड इन वाशिंगटन डीसी कोठी जिबा पई विनस ऑप्शन बी इज आंसर विनस ओके केबे ना 2029 द लॉन्च विल बी गोइंग टू बी हेल्ड इन 2029 ओके एंड बाय 2031 it will enter the atmosphere in 2031 particularly in June. Now this is the first attempt to send any vehicle to Mars. Got it? Send any vehicle to Mars. India जेमती आमर इसरो अच्छी बैंगलोर रे सेमती सतीश धवन स्पेस सेंटर को स्पेस रे अच्छी और सतीश धवन स्पेस सेंटर हेडक्वार्टर और को प्लेस रे सिचुएटेड कर आंसर दियंतु सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सेमती आमर वेलर आइलैंड थिला तार ना चेंज है कि एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड रे चेंज है रिसेंटली आमर मिसाइल टेस्ट है अग्नि 4 मिसाइल हैज बीन टेस्टेड ओवर देयर Venus is the brightest star. Yes, the part of geography. Exactly. So, next question jiba. Where is the International Shooting Sports Federation (ISSF) World Cup held? कौन? Recently, it was held in the capital of Azerbaijan, that is Baku. को जगह रहला द कैपिटल ऑफ अजरबैजान बाकू ओके ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ISSF रो हेडक्वार्टर कोठी इट इज सिचुएटेड इन म्यूनिक जर्मनी सिचुएटेड इन म्यूनिक जर्मनी ए इवेंट रे ओके ए इवेंट रे इंडिया रैंक केते रहला इंडिया रैंक रहा 5th एंड टोटल नंबर ऑफ आम जब मेडल देखा आम टोटल 5टा मेडल ही जीतती आउट ऑफ 5 2 गोल्ड एंड 3 सिल्वर मेडल 2 गोल्ड एंड 3 सिल्वर मेडल सेम टाइप जो देखा ए इवेंट रे
टॉप रैंक रे और नंबर 1 रैंक रे क्या आसला दैट इज रिपब्लिक ऑफ कोरिया और वी कैन से इट इज साउथ कोरिया ओके रिपब्लिक कोरिया और साउथ कोरिया केटा गोल्ड 5 गोल्ड मेडल on this particular championship that is international shooting sports federation shooting रे इंडिया रे किए ओलंपिक गोल्ड जीतछन्ती आज पर्यंत who is the first person or first individual to own gold in summer olympic events Mr अभिनव बिंद्रा किए जीतछन्ती अभिनव बिंद्रा आज पर्यंत आमे दुईटी ही गोल्ड इंडिविजुअल कैटेगरी जीतिछन्ती दैट इज वन इज अभिनव बिंद्रा and one is Neeraj Chopra okay one is Abhinav Bindra one is Neeraj Chopra so India ra problem kon hochi we have the population of 1.35 billion 135 koti lok amar but at the time of competition in a larger event we are only participating little bit and sethre bi amar number of medal winning chances bada kam अछि because इंडिया रे बहुत सारा प्रायोरिटी स्पोर्ट्स को दिया जाउनी आज भी जदि हमें स्कूल लेवल के स्पोर्ट्स रे इन्वॉल्व होगा चाहिबो मे बी पेरेंट्स सपोर्ट करना थी और जदि भी इन्वॉल्व होगा चाहू जे देन हमको सेटिक टाइप रो स्कोप और रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं दैट इज द मेजर प्रॉब्लम ओके सो रिसेंटली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मेशन करा जाउची से एजुकेशन पॉलिसी रे वर्क बेस्ड एजुकेशन हला किबा हमर फिजिकल एजुकेशन रो बहुत सारा इंपोर्टेंस और प्रायोरिटी दिया जाउची एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट आफ्टर 2014 Government of India have taken the initiative called Khelo India Game. Okay? Khelo India Game Initiative. Under that program, jahar talent achi in different countries or different state level, they can participate over here. Khelo India re duita game hoye, gote hochi Khelo India Youth Game and Khelo India University Game. University Game recently Bangalore arranged hoichi and Youth Game recently is going to be held in Panchkula, Haryana. But event हमारा chances टिके कम होते due to COVID issues. Okay? जब देखा जाए world of सबसे largest event और नांगन. Which one is the largest event in the world? That related टिके discussion करी बाजी. It is Olympic. को Olympic? Olympic basically हमें 4 types से divide कर चुनती. One is summer Olympic. One is Winter Olympic, one is Paralympic, one is Youth Olympic. That's 4 segment of Olympic: summer, winter, para, and Youth Olympic. And the Summer Olympic is considered as the highest multi-sports event or largest multi-sports event in the world. Which one? Summer Olympic. Recently, Summer Olympic event gala 2020 in Tokyo, 2024 in Paris, 2028 in LA or Los Angeles, USA, and 2032 is venue fixed in Brisbane, Australia. मन रखिए चारिटा कहीं वेन्यू आसी जाए तो ओलंपिक्स सब तो लार्जेस्ट गेम तो एग्जाम रे तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री जहाँ भी सब इश्यूज अच्छे आसबार चांसेस अच्छी आमर ओके देन मैक्सिमम चांसेस अच्छे कि ओलंपिक विषय किसी क्वेश्चन आसी जाई पारे ओके सो स्टूडेंट मानकर बहुत सारा प्रॉब्लम्स डाउट्स अच्छी बहुत सारा क्वेरीज भी आछि कि सर कम नंबर ऑफ पोस्ट अच्छे आम कौन करूँ वी हैव वेरी लिटिल नंबर ऑफ पोस्ट है ना आरआरबी रे कम नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी है ना एग्जाम सीटी आसीगले आम कौन करूँ जदि आईबीपीएस क्लर्क ना कौन करूँ आईबीपीएस पीओ ना कौन करूँ एमती सारा बहुत सारा क्वेरीज आसे स्टूडेंट मानकर ओके से क्वेरीज रो गोटे सॉल्यूशन आपन खाली कहबाक चाहूँ छोट डिस्कशन ओके इट मे बी हेल्पफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस टेक एन एग्जांपल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक ओके और एसएससी जहाँ भी आम कंबाइंडली जो किसी प्रिपेरेसन कर ओके भाविले गोटे इयर रे आमर केतेटा नंबर्स ऑफ पोस्ट थाके वी हैव आरआरबी क्लर्क एंड पीओ वी हैव एसबीआई क्लर्क एंड पीओ वी हैव like IBPS exams, clerk and PO. After that NABARD examinations, RBI examinations, okay. Same type of insurance रो बहुत सारा examinations आछियो like LIC and other national level insurance. अब SSC level जे हम डिस्कशन करछन कोन कोन अछि like हमर CGL अछि, CHSL अछि, MTS अछि, रेलवेज अछि, स्टेट गवर्नमेंट रो बहुत सारा जॉब्स अछि है ना नै जदि कंबाइंडली देखिबा गोटे वर्ष रे हम पाखरे नंबर ऑफ पोस्ट केते अछि जदि हमें कंबाइंडली देखिबा
आम पाखे गोटे नंबर और गोटे इयर रे नंबर ऑफ पोस्ट केते अछि पाखापाखि 50,000 और पाखापाखि यू कैन कंसीडर 1 लाख गवर्नमेंट जॉब रो नंबर ऑफ पोस्ट देखा जाए मु खाली दुईटा ही सेगमेंट ऊपर डिस्कशन करछि कोन ना एसएससी और बैंकिंग पाखापाखि जते कंसीडर कर जाए मे बी 1 लाख पाखापाखि हमर जॉब रहि जाउछि गोटे इयर स्टेट गवर्नमेंट को जते इंक्लूड करिबा तो भाबंतु 1 लाख नंबर ऑफ पोस्ट वी हैव एंड वी आर द कॉम्पिटिटर्स डिफरेंट नंबर्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स गोटे छोटो मोड को आमे डिफरेंट एंगल देखिबा टेक एन एग्जांपल ओलंपिक समर ओलंपिक गोटे इवेंट नबा 100 मीटर मेन रेस ओके 100 मीटर मेन रेस एंड समर ओलंपिक होची कोन ना 4 वर्ष थरे हुए ए इवेंट केते वर्ष हुए 4 वर्ष थरे होची ओके कीप इट इन माइंड तो हमारा जो इवेंट्स थाए 100 मीटर मेन रेस तो इवेंट तो गोटे ही इवेंट थाए ना 10 थर इवेंट होता है गोटे ही इवेंट हुए सेम टाइप रो 200 मीटर में भी आउ गोटे इवेंट होतियो 400 मीटर में भी आउ गोटे इवेंट होतियो बट 100 मीटर रेस केते होची गोटे ही होची आउ ए रेस रे नंबर ऑफ प्राइज कोन अछि जे फर्स्ट हबो गोल्ड जो सेकंड हबो सिल्वर जे थर्ड हबो ब्रोंज यस और नो कोन अछि गोल्ड सिल्वर एंड ब्रोंज सो एबे जति हम खाली कंसीडर करिबा आ एटा को हम रियल लाइफ और रियल एग्जामिनेशन सहित खाली लिंक करिबा और कंपेयर करिबा देन कोन हबो भाबंतु 4 वर्ष रे थरे गोटे एग्जाम होछि इन 4 इयर्स देयर इज अ सिंगल एग्जामिनेशन ओके कंपटीशन केते ऑल ओवर द वर्ल्ड समस्त कंपीट करि परिबे नंबर ऑफ पोस्ट केते अछि 1 2 1 3 ओनली 3 नंबर ऑफ पोस्ट 4 वर्ष रे थरे कंपटीशन ओनली 3 नंबर ऑफ पोस्ट एंड सबुठ इंटरेस्टिंग जिंस होछि कोन गोटे कंपटीटर और गोटे एथलीट द लाइफ रो मिनिमम 8 आवर्स पर डे केते मिनिमम 8 आवर्स पर डे स्पेंड करछि एंड केते वर्ष स्पेंड करछि 4 वर्ष 4 आवर्स और 4 इयर्स मिनिमम 8 आवर्स पर डे प्रैक्टिसिंग डे एंड नाइट एंड कोन पाई ना नंबर ऑफ पोस्ट मात्र 3 उठी अछि he or she knows that there is only 3 numbers of post but we have to qualify that post that's why they are giving 8 hours per day for 4 years and finally they are achieving one or finally they are achieving out of this one just like Neeraj Chopra just like Mary Kom just like PV Sindhu है ना नहीं now just think about ourselves we have 1 lakh number of posts in a single year dear friends just think 1 lakh number of posts in a single year are we not eligible to get a single post out of it absolutely it is possible okay don't think हमको बहुत सारा नेगेटिविटी हमें माइंड को पड़े आछि कि एटा हबो ना न हबो okay don't think about that process or don't think about the result only think the process how good or how important you can give your time that कि आपण माने 6 hours 7 hours 8 hours आपण केते परिश्रम करि परिबे and out of that level definitely will get your job okay I hope a छोटो example आपण लाइफ रे छोटो impact पके परिबे so let's go to the next question who won the 10th edition of the Norway chess tournament 2022 which was held in the Norway option A कौन आंसर हबो ऑप्शन A B C और D A B C और D waiting for your answer dear आंसर कौन हबो A B C और D शतरंज का खेल ऑप्शन सी नो 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 से फर्स्ट राउंड रे ग्रुप ए रे ही सिलेक्ट हेले ग्रुप ए परे और सेकंड राउंड से आउ सिलेक्ट हे परिना द आंसर इज मार्गस कार्लसन ओके फ्रॉम नॉर्वे कोठी नॉर्वे रे कार्लसन जे कि ए पोजीशन होल्ड करे 10th एडिशन ऑफ नॉर्वेन चेस चैंपियनशिप इज ओन बाय मार्गस कार्लसन जेमती ओलंपिक रो हाईएस्ट अथॉरिटी और हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी होची आईएलओ इंटरनेशनल ओलंपिक सॉरी आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेम टाइप रो चेस रो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी रो ना कोन इंटरनेशनली इट इज FIDE okay that is कौन कह जाए इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और वर्ल्ड चेस फेडरेशन कह जाए इट इज सिचुएटेड इन लॉसन इन स्विट्जरलैंड इज सिचुएटेड इन लॉसन
स्विट्जरलैंड मन रखिए लसियान आहुरी भी हेडक्वार्टर्स अच्छी कार ना इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी भी हेडक्वार्टर हूँ लसियान रे ओके चेस चैंपियनशिप हेडक्वार्टर भी लसियान रे इंटरनेशनल हॉकी हेडक्वार्टर भी हूँ लसियान रे बहुत बड़ बड़ इंटरनेशनल रिक्वेस्ट हेडक्वार्टर हूँ लसियान सो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी इंडिया फेमस प्लेयर होचन किए विश्वनाथन आनंद भी नेक्स्ट राउंड को जाई पार नाहंती जोटा कि फाइनल राउंड को जाई पार नाहंती एंड डिडंट क्वालिफाई द होल सीरीज विनिंग गेम विश्वनाथन आनंद को विषय गोटे जिन खाली जानी था मन रखी था मे भी एग्जाम आसी पारे ही इज द फर्स्ट अवार्ड विनर ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न ओके फर्स्ट अवार्ड विनर ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न गॉट इट जोटा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ना चेंज होके भी कौन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है विच इज द हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ कौन स्पोर्ट्स इन इंडिया ओके स्पोर्ट्स इन इंडिया सो go to the next question Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has inaugurated Dharodar the National Museum of Customs and GST in which place in which place question number 7 co place right la गोवा को जगह गोवा गोवा इनिशियली से गोटे पोर्तुगीज बिल्डिंग थिला पोर्तुगीज कहीं गोवा को ऑक्युपाई करते पोर्तुगीज तो पोर्तुगीज बिल्डिंग पोर्तुगीज जाई सारा पर से बिल्डिंग को स्पेसिफिकली कौन करागला ना दिगला गोटे म्यूजियम ना दिगला दैट इज नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी बोली कहले गॉट इट and it was done because of the 75th independence anniversary of our nation और जोटा कह जाउची आजादी का अमृत महोत्सव अवसर रे बहुत सारा इनिशिएटिव निका जाउची जेंत लास्ट क्लास रे हम डिस्कशन करथले कोन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च करछन सेम टाइप रो कोन करा गला ना कस्टम्स एंड जीएसटी रो म्यूजियम तैयार करा गला कस्टम एंड जीएसटी एटा कोन These are the taxes, different types of taxes. That India देखिए there are two types of tax structure over here. One is indirect, one is direct. गोटे direct tax अच्छी गोटे indirect tax अच्छी. The question is about tax कौन ताले कौन कोई बात? If someone will ask you that what is tax? Interview रे जब interview पचार दला कि tax कौन? Okay ताले tax रो definition हमें कौन कोई परिवार? Not explained in Odia, that is kora. Okay. कौन कोई बात ना टैक्स इज द कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द सिटीजन ऑफ अ कंट्री फॉर डेवलपिंग इट्स नेशन गोटे देशर डेवलपमेंट पाई गोटे सिटीजन तार कंपल्सरी किसी पेमेंट पे करिया को पड़िबो आमे किसी एक्सपेंडिचर पे करछन किसी इनकम रे पे करछन वेयर ओके जनरल पब्लिक आर आल्सो पेइंग द टैक्सेस आर नॉट आमे पे करछन टैक्स कहीं ना आम फ्री रे गवर्नमेंट मेडिकल यूज कर फ्री रे हॉस्पिटल्स यूज कर फ्री रे स्कूल यूज कर रोड कंस्ट्रक्शन सब जिन यूज कर आमको बहुत सारा सब्सिडीज मिलती टंका किया चाउल मिलती ओके जमी कालिया योजना मिलती जमी पीएम किसान ओके दीज आर ऑल डेवलपिंग वर्क्स इज डन थ्रू द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एंड द इनकम कौट हो वी आर पेइंग द टैक्सेस इन इंडिया द इंडायरेक्ट टैक्सेस consider or indirect taxes regulated by CBEC. CBEC, it is Central Board of Indirect, sorry, CBIC, okay. CBIC, Central Board of Indirect Tax and Custom. And the direct tax is regulated by in India is CBDT, Central Board of Direct Tax. Here, the GST and custom duty are two indirect taxes, okay. Two indirect taxes. Jodi direct tax under देखिबा कोन रहिबो ना इनकम टैक्स रहि परिबो, ओके, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रहि परिबो, ओके, जेमति हमरो कॉर्पोरेट टैक्स रहि परिबो, एमएटी मैट रहि परिबो. सेम टाइप रो इनडायरेक्ट टैक्स अंडर कोन होछि हमरो कस्टम ड्यूटी रहिला, सेल्स टैक्स रहिला, वैट रहिला, एज वेल एज योर कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी इज मर्ज इन जीएसटी नाउ. और जीएसटी कोन ओवरऑल जा इनडायरेक्ट टैक्स असला मेजर इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करा जाय कि जीएसटी फॉर्मेशन करा गला, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस. Got it? Go to the next question.
Which payment bank has partnered with Go Digital General Insurance Limited to provide the small and medium business owners with shop insurance coverage? Shop insurance coverage. कौन आंसर कौन? Paytm Payment Bank, Airtel Payment Bank, India Post Payment Bank and Fino Payment Bank. What will be your answer? कौन आंसर कौन होगा? Paytm, Airtel, India Post और Fino? Fino Payment Bank. Ranjan, yes, Fino is the right answer. Okay. Fino is the right answer. अच्छा, एटा बहुत important question हुए कि exam रे पढ़ी पारे. There are very few chances कि एमती type of questions exam रे आसी पारे, but यार concept में भी exam रे आसी पारे. Like payment bank रो concept के देतले और को committee रो recommendation अनुसार payment bank के देतले. बहुत सारा committees form होइछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू रे, जस्ट लाइक हिल्टन एंड यंग कमिशन जहाँ द्वारा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन होइछि. ओके, नरसिम्हम कमिटी जहाँ द्वारा कि आरआरबी रो फाउंडेशन होइछि. सेम टाइप रो गोटे कमिटी अछि उषा थोराट कमिटी जहाँ ପାଇଁ कि स्मॉल फाइनेंस बैंक रो फाउंडेशन होइछि. ओके, सेम टाइप रो कोन नचिकेत मोर committee. On the recommendation of Nachiket More committee, the payment bank concept has been derived in India. तो इंडिया रे फर्स्ट पेमेंट बैंक रो ना कोन जे कि ऑपरेशनल हला, दैट इज एयरटेल पेमेंट बैंक. ओके, टू स्टार्ट अ पेमेंट बैंक वी नीड अ मिनिमम 100 crores ऑफ कैपिटल. केते 100 crores रो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रे हमें कोन कहचंदी बडे पेमेंट बैंक स्टार्ट करि परिबा. एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली पेमेंट बैंक लोन देई परिबो ना देई परिबोनी, क्रेडिट कार्ड इश्यू करि परिबो ना करि परिबोनी. As we are all considering as a bank, but it cannot provide any loan or it cannot provide any credit cards. Okay, but it can accept deposit. At deposit jaha accept korchi kete na maximum 2 lakhs of deposit it can accept it. Okay, na payment bank. Got it? It was introduced. आपण मानकर बे क्वेश्चन थिबो कि सर जदि ए जिंस से करि परिबोनी ए फंक्शन ताको रेस्ट्रिक्शन करा जायछि तले ताको कोन पाई लाइसेंसिंग भी दिया जायछि. Because it is a part of your financial inclusion. Government of India got a major initiative that is financial inclusion. What do you mean by financial inclusion? सुनिथिबे टर्म बहुत थोड़ा सुनिथिबे और बहुत एग्जाम रे भी आसे. Financial inclusion. What do you mean by it? Financial inclusion means to provide banking services or financial services to the people of unbanked rural area in a very affordable cost. केते कम खर्च रे केते कम पैसा रे आमे रूरल पीपल माने को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करि परिया. दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन. ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग सो मच ऑफ इनिशिएटिव कोन पाई ना टू इंप्रूवाइज द फाइनेंशियल इंक्लूजन. दैट्स व्हाई पेमेंट बैंक रो लाइसेंस प्रोवाइड करा गला, स्मॉल फाइनेंस बैंक रो लाइसेंस प्रोवाइड करा गला. हन नै केवाईसी नाम रे बहुत सारा सिंप्लिफिकेशन करा गला, जेमति कि बहुत सारा स्कीम लॉन्च करा गला. लाइक जीरो अकाउंट बैलेंस है, नो फ्रिल अकाउंट है, बीएसबीडी अकाउंट है, यू कैन से प्रधानमंत्री जनधन योजना है. ओके, दिस आर ऑल इनिशिएटिव हैज बीन टेकन कोन पाई ना में फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंप्रूवाइज करियार अछि. ओके, जदि फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम इंप्रूवाइज न करछन ताहले इंडिया रो जो फाइनेंशियल सेक्टर अछि और रूरल सेक्टर रो जो लोक माने अछंती दे विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम इकोनॉमी. से मानको पैसा हम इकोनॉमी रो पार्ट हेई परिबोनी. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ भी सब सर्विसेज प्रोवाइड करछि, जहाँ भी सब सब्सिडीज प्रोवाइड करछि, से सब्सिडीज और से सर्विसेज भी के ए माने अवेल कर परिबेनी. गॉट इट? यस. सो जेमति पेमेंट बैंक बाय मिनिमम 100 crore रुपीस दरकार, सेमति स्मॉल फाइनेंस बैंक बाय केतना दरकार? मिनिमम 200 crore रुपीस. सेम टाइप रो कोनोस प्राइवेट सेक्टर बैंक हला, कोनोस यूनिवर्सल बैंक हला. ओके, जेमति हमरो येस बैंक अछि, कोटक महिंद्रा अछि, सेम टाइप रो बैंक बाय भी मिनिमम 500 crore रुपीस रो रिक्वायरमेंट मिनिमम कैपिटल. सेम टाइप रो जदि कोनोस फॉरेन बैंक इंडिया रे आसी तारो ब्रांच ओपन करछि, सेमान को भी मिनिमम 500 crores रो कैपिटल दरकार अछि. ओके, so shall we go to the next question और ए रिलेटेड आगु छि डिस्कशन करिबा. yes, very good. Those who are participating and given your valuable answer, thank you so much all. Very good, very good. So go to the next question.
Who among the following has been appointed as the MD and CEO of RBL Bank? RBL stands for Ratnakar Bank Limited. RBL stands for Ratnakar Bank Limited. Interesting laguଛି ଯେତେବେଳେ RBL ର ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି modern ଲାଗୁଛି but ତାର original ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ Ratnakar Bank Limited. So RBL ଟା କେମିତି type ର bank? Is it a foreign bank? Is it a Indian private sector bank or is it a public sector bank? କୁହନ୍ତୁ answer କ'ଣ ହେବ? Answer ହେଉଛି C. Answer is C. R. Subramani Kumar is the answer. But tell me, RBL केमती type of bank? Private sector bank, public sector bank, or any foreign bank? केमती type of bank? It's a Indian. RBL is a Indian private sector bank. Okay, RBL is a Indian private sector bank. You can say. जेमती हमारे HDFC अच्छी, जेमती ICICI अच्छी, same type रो ये गुटे Indian private sector bank बोले हम कहते हैं. Okay, the appointment जे करते हैं Reserve Bank of India रा recommendation अनुसार ही ये appointment है जी. And RBL is situated in Mumbai. The headquarter of RBL is in Mumbai and it was started in the year 1943. 1943. Private sector bank. Pavitra, right answer. Shraddha, right answer. Everyone who have given is a right answer. Okay? India जैसे सारा बैंक अच्छी, private sector banks अच्छी, India जैसे सारा private sector banks है, सब तो largest private sector bank होता है, on the basis of number of, number of branches. जैसे number of branches अनुसार देखिए सब तो largest private sector bank होती है ICICI. Okay, but जब हमें market capitalization अनुसार देखिए, then it is HDFC Bank. On the basis of market capitalization, it is HDFC Bank. Got it? So, go to the next question. The DAS World Trade Organization WTO's Ministerial Conference, that is MC2A, opened at WTO's headquarters Geneva. Already answered the MC12. One can easily got the answer. Which edition? It is the 12th edition. Is the 12th edition. It is the 12th edition. So, WTO is situated in Geneva. Everybody knows that it is situated in Geneva. But it was founded in the year, that is in 1st January 1995. International trade promotion पे जितने सारा institution अच्छे थी सब तो largest institution हो चुका है ना World Trade Organization. ओके तो इनिशियल जिते बड़े स्टार्ट हेतला WTO कौन से टाइम रे WTO रो ना WTO है कि थिला की नो इट वाज GATT 1948 रे स्टार्ट हला GATT कौन भाई ना इंटरनेशनली ट्रेड प्रमोशन करिया पे एंड इट वाज अ टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन in that time. GATT stands for General Agreement on Tariff and Trade बोली कहा जाए. General Agreement on Tariff and Trade बोली कहा जाए. Okay, 1948 established इतला, but it has given a permanent status in 1995 that is called World Trade Organization. Okay, 1995 पे तक permanent status मिलता World Trade Organization. Okay, next question जी बात. Time is not permitting so much, that's why हमको quickly ये सब जिनसे सारी बात पढ़ी वो. 1948. Very good. Those who are giving answer, I'm really proud of you all and appreciating all your answers. Who became the world's second longest reigning monarch in the history after the French Louis XIV? French Louis XIV. French Louis XIV से कहते थे ना, sorry. French Louis XIV केते दिन तांकर लाइफ स्पैन अंडर है से सर्व करचंती 72 years 110 days 72 years 110 days ओके क्या है आंसर ऑप्शन डी क्वीन एलिजाबेथ 2 वेरी गुड क्वीन एलिजाबेथ 2 क्वीन एलिजाबेथ 2 केते दिन सर्व करचंती
she has taken the crown in 1953. In 1953, so approximately 70 years plus. Okay, 70 years 126 days plus, because Thailand रो जो king थिले से कहते 70 years 126 days serve करथिले, and she is serving more than that, taken the initiative in 1953. But सबुठु largest और सबुठु highest monarchy के serve करचंदी, that is Francois Louis XIV, that is 72 years and 110 days. Got it? So next question जीवा, next question एंड करिवा, टाइम भी परमिट करनी हमको, आ एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आ जहाँ विषय में डिस्कशन करछन से भी बहुत इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट. He is a real philanthropist of the world, you can say. Okay, who has presented the honorary doctorate of the lecture by the Maharashtra government, Bhagat Singh Koshiyari. कहतु, is it MS Dhoni, Ratan Tata, Amitabh Bachchan or Mukesh Ambani? Amitabh Bachchan or Mukesh Ambani? Ratan Tata, the great Ratan Tata, the great Ratan Tata, the great philanthropist of our country, Mr. Ratan Tata. Very good. The answer is Ratan Tata. हाँ ना, इंडिया जेकोसी प्रॉडक्ट देखा जो कहती छुंचिटू नहीं कि जहाज पर्यटन सब जिन टाटा ही अच्छे, रतन टाटा. सो ऑनररी रिलेटेड जब एम इनफॉरमेशन डिस्कशन कर लाइक वर्ल्ड सब हाईएस्ट ऑनर जो देखा जाए, वर्ल्ड सब हाईएस्ट ऑनर से आम क्या देखुं, नोबेल को ही देखुं. तार रेस्पेक्टिव फील्ड सब हाईएस्ट ऑनर नोबेल. नोबेल केतेटा कैटेगोरीज से दि जाए. नोबेल इज समथिंग देखो एग्जाम रे को जिन सब अधिक आसबार चांसेस अच्छी, जोटा सब हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट और जोटा सब सुपरलेटिव डिग्री, हाँ ना नहीं, को ऑनररी डिग्री अच्छी जोटा कि सब हाईएस्ट, स्पोर्ट्स इवेंट जोटा कि सब हाईएस्ट, हाँ ना नहीं, ये सब इनफॉरमेशन आसबार चांसेस सब अधिक अच्छी. तो जो ओलंपिक विषय डिस्कशन करवा, सॉरी नोबेल प्राइज विषय, नोबेल इज गिवन इन 6 कैटेगोरीज. लास्ट को कॉन्सेप्ट और टे स्टैटिक पार्ट को डिस्कशन करके ही एंड करवा 6 कैटेगोरी. ओके, वन इज पीस, वन इज लिटरेचर, वन इज फिजिक्स, वन इज केमिस्ट्री, वन इज मेडिसिन जोटा को फिजियोलॉजी बोली कहा जाए, एंड वन इज इकोनॉमिक्स, वन इज इकोनॉमिक्स. ओके, देयर आर 6 कैटेगोरीज कम्स अंडर कौन ना नोबेल प्राइज अंडर 6टा कैटेगोरी ही आसछि. सो ये जो 6टा कैटेगोरी आसछि, 6टा कैटेगोरी भितर दिस 5 कैटेगोरीज, ओके, दिस 5 कैटेगोरीज इज गिवन बाय को गवर्नमेंट, डेनमार्क. ओके, के दोछि, डेनमार्क गवर्नमेंट दोछि, हाँ नहीं. आ जो पीस रहिला, पीस के दोछि, गिवन बाय नॉर्वे, सॉरी नॉट डेनमार्क, इट इज स्वीडन, Sweden government, and the peace prize is given by your Norway parliament. कि दो जंदी Norway parliament. Got it? मन रखता इंडिया रा फर्स्ट जे कि पीस प्राइज प्राइज नोबेल प्राइज फॉर पीस, सी इज मदर टेरेसा. सेकेंड कैलाश सत्यार्थी. ओके, लिटरेचर सब हाईएस्ट और फर्स्ट नोबेल लॉरेट किए थे, जो मैंने नोबेल प्राइज पानी अल्टीमेटली नोबेल लॉरेट बोली कहा जाए. एशिया रो फर्स्ट नोबेल लॉरेट इज रविंद्रनाथ टैगोर. फिजिक्स पाई फर्स्ट के पाइले सीवी रमन. सेम टाइप इकोनॉमिक्स पाई फर्स्ट के पाइले के अमर्त्य सेन. ओके, इकोनॉमिक्स पाई अमर्त्य सेन. मन रखिए नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन, जस्ट लाइक आवर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेमती गोटे बैंक अच्छे सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन. तो तार सेंट्रल बैंक रो ना हूँ कौन, स्वीडन सेंट्रल बैंक, it is Vanik Riksbank. The central bank of Sweden is Vanik Riksbank, and it is given by the Vanik Riksbank, called by a Nobel Prize for Economics. Nobel Prize for Economics. There are respective sector रे एटा हो सब हाईएस्ट ऑनर. मन रखिए कहीं जेकोसी वर्ष नोबेल जहाँ भी प्राइज आसछि, जो कि ASO एग्जामिनेशन पे दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, तो एथिरो एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबार प्रोबेबिलिटीज बहुत अच्छी. ओके, तो टिके एटलिस्ट रिविजन करके जाइथिबे,
तो क्वेश्चन आम अटेंड इजिली कर ओके सो टाइम इज नॉट परमिटिंग सो मच सो आई होप कि आज सेशन आप एंजॉय करेंगे आम जहाँ भी सारा इनफॉरमेशन डिस्कशन कले से इनफॉरमेशन आप नोट करेंगे डेफिनेटली दिस इनफॉरमेशन विल हेल्प इन द कमिंग एग्जामिनेशंस ओके जदि सेशन ठीक लगुच एंड आज सेशन आप एंजॉय कर यू कैन कमेंट्स ऑन योर चैट बॉक्स एंड आई होप कि आपण मैंने गोटे डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करूँ स्टूडेंट लाइफ मेंटेन करूँ बिकज कह जाए कि समस्त डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन अच्छे गोटे डॉक्टर तार लाइफ मिनिमम 8 आवर्स कौन कर मेडिसिन काम कर लोक सेवा कर गोटे टीचर मोर देन 8 आवर्स से कौन कर स्टूडेंट मानक एडुकेट कर गोटे वकिल मोर देन 8 आवर्स से तार लाइफ रे कौन कर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर गोटे पुलिस तार 8 आवर मेजर टाइम कौन कर तार प्रोफेशन को सेम आज यू थिंक एज अ स्टूडेंट तो स्टूडेंट भी मिनिमम 8 आवर्स विल बी गिवन टू स्टडी एंड दोज हु आर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर और कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स से तो एटलिस्ट से लाइफ मेजोरिटी ऑफ टाइम बिकॉज यू हैव वेरी लिमिटेड नंबर्स ऑफ टाइम यू नो कि एबे जो टाइम आम यूटिलाइज करवा जो टाइम जिते फोर्स से दे पारिबा और जी एनर्जी रे आम ये टाइम दे पारिबा कमिंग डेज रे टाइम आसबन कहीं जी गोटे वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष हो जाए देन वन टाइप्स ऑफ कौन आसो आपको सेम सेम जिन पढ़ाई इच्छा भी हेनी तो नाउ इज द परफेक्ट टाइम ओके नाउ इज द परफेक्ट टाइम गिव योर 6 मंथ इन अ फुल फ्लेज मैनर सब जिन भूली जातु यू कैन सैक्रिफाइस योर 6 मंथ ऑफ टाइम ओके एमती नुह कि सैक्रिफाइस आई मीन सब जिन सैक्रिफाइस करा पड़ो जस्ट लाइक कि मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा नॉट लाइक दैट बट यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग टू गेट अ लाइफ टाइम सेटलमेंट और अ परमानेंट सेटलमेंट इफ यू गेट अ गवर्नमेंट जॉब then it will be a permanent settlement you will have a secure life you will have a secure you know कौन हो आपन को सोसाइटी रिस्पेक्ट मिलती गोटे हैंडसम पैकेजेस मिलती आपन को लाइफ सिक्योरिटी मिलती तो ताठू अधिक कौन दरकार अच्छे 6 मंथ टाइम आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ओके थैंक यू सो मच कि आज ऑस्पिशियस डे रे आपण माने क्लास अटेंड कले ओके थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू अगेन अ वेरी हैप्पी रज एंजॉय द डे थैंक यू सो मच सी यू नेक्स्ट क्लास एंजॉय द डे